Someone who has said within the court and outside that India's freedoms will be safe as long as journalists can speak truth to power without being chilled by a threat of reprisal. The fact is today a large section of journalists in India finds itself working under the threat of reprisal, and it is imperative that the judiciary confronts power with the fundamental truth that there is a constitution to which we are all answerable. On October 3rd, 2023, the Special Cell of Delhi Police raided the homes of 46 journalists, editors, writers and professionals connected in one way or another to the all. Hello. Well, what I was saying, please, I will request everyone to sit down if you can find it here. Yeah, what I was saying, on October 2023, Special Cell of Delhi Police raided the house of 46 journalists, 46 journalists, and audible, editors, writers, and professionals came to connect in one way or another to the online newspaper Newsclick. Raids led to the arrest of 4 persons under various sections of the Unlawful Activities Prevention Act and the seizure of mobile phones and computers without ensuring the integrity of their data, a basic protocol that is essential to due process. The invocation of UAPA is especially chilling. Journalism cannot be prosecuted as terrorism. Enough instances in the history about to tell us where they eventually goes. During your time at the Supreme Court, you have seen how on numerous occasions country's investigating agencies have been misused and weaponized against the press, sedition and terrorism. Cases have been filed against editors and reporters, and multiple sequential and or frivolous FIRs have been used as an instrument of harassment against journalists. The purpose of addressing this letter to you is not bypass or circumvent the process or procedure established by law. But when journalists are summoned and their devices seized in the name of investigation, there is an inherent malice in the process that must be checked. Just as the police are obliged by the Constitution to state the grounds of arrest, it must equally be a precondition to questioning. In his absence, as you've seen in the Newsclick case, vague assertions about the investigation, also unspecified offences, have become the grounds for questioning journalists
about the coverage internal and the farmers movement, the government handlings of COVID pandemic, and the protests against the Citizenship Amendment Act. Incidentally, I would say some of the journalists are questioned when the moon landed, when in which side it landed. It's like almost a UPSC question. The moon landed where? Moon landed. The moon landed. Question was asked. Question was asked. You should give them some kind of a credit of the wisdom or knowledge. Just, we do not say that journalists are above the law. We are not and do not wish to be. However, intimidation of the media affects the democratic fabric of society, and subjecting journalists to a concentrated criminal process because the government disapproves of the coverage of national and international affairs is an attempt to change the face by threat or reprisal. The last page perhaps. I would request you to take more to get a feedback to go on to the rest of I'll just take it on from here. Wide powers of investigation are given to the state on the assumption of bona fides on the part of its agencies. Equally, a wide immunity against coercion must be read into the constitutional provisions of free speech, and methods must be devised against police overreach, especially given the repeated misuse of these powers. Far too much is at stake to test every case at the end of a trial, which can last years. Journalists arrested under UAPA can end up spending months, if not years, behind bars before they are even granted bail. We already have the case of Sadiq Kappan before us. He was incarcerated for 2 years and 4 months before finally securing bail. The tragic death of Father Stan Swami in custody is a reminder of how indifferent the authorities seem to have become towards human life under the guise of combating terrorism. Our fear is that actions against the media have been taken beyond measure and allowed to continue in the direction they are headed. It may be too late to take effective or remedial steps. It is therefore our collective view that the higher judiciary must now intervene to put an end to the increasingly repressive use of investigative agencies against the media. Specifically, we will be obliged if the courts would consider the following. Number one, the framing of norms to discourage the seizure of journalists' phones and laptops on a whim, as has been the case. The Supreme Court is seized of this issue in a writ petition filed by noted academics and has not been satisfied by the affidavits filed by the Union of India in these proceedings. While the wheels of justice have been turning, the state has continued to act with impunity. The seizure of devices compromises our professional work. As the Supreme Court itself has observed in the Pegasus matter, the protection of sources is, quote, an important and necessary corollary, unquote, of freedom of media. But laptops and phones are no longer just official tools used to conduct official business. They have fundamentally become an extension of oneself. These devices are integrated into our entire lives and have vital personal information contained in them, from communication to photographs to conversations with family and friends. There is no reason or justification that investigating agencies should have access to such material. Number two, evolving guidelines for the interrogation of journalists and for seizures from them to ensure that these are not undertaken as fishing expeditions with no bearing to an actual offense. Number three, finding ways to ensure the accountability of state agencies and individual officers who are found overstepping the law or willfully misleading courts with vague and open-ended investigations against journalists for their journalistic work. We, the undersigned, write this letter to your Lordship after considerable thought and contemplation. There have been many instances over the past few years when assaults on the free press by the state have required judicial intervention, and we continue to pursue such cases. But the developments over the past 24 hours
have left us no option but to appeal to your good conscience, to take cognizance and intervene before it is too late and an autocratic police state becomes the norm. As journalists and news professionals, we are always ready and willing to cooperate with any bona fide investigation. However, ad hoc sweeping seizures and interrogations surely cannot be considered acceptable in any democratic country, let alone one that has begun advertising itself as the mother of democracy. Sincerely, and this is signed by Digipak News India Foundation, the Indian Women's Press Corps, Press Club of India, New Delhi, Foundation for Media Professionals, Network of Women in Media India, Chandigarh Press Club, National Alliance of Journalists, Delhi Union of Journalists, Kerala Union of Working Journalists, Brihan Mumbai Union of Journalists, the Free Speech Collective Mumbai, Mumbai Press Club, the Arunachal Pradesh Union of Working Journalists, the Press Association of India, and the Guwahati Press Club. So that's 15 media organizations in all have chosen to put their collective weight behind this letter that we have drafted as one institution that is central to democracy, which is the media, to another, which is the judiciary, asking that the judiciary play its role in upholding all the freedoms that the Constitution guarantees for journalists and, of course, for the wider citizenry. Yesterday night, actually, Mumbai Press Club chairman and Calcutta Press Club president both were here. So we have also told them, and we had a plan to sensitize all the press clubs of the country, so that it will long, so that we can build up a nationwide program, a nationwide protest. Calcutta Press Club president is here. I hope he agrees to what then we can include his. You are giving your consent. So Calcutta Press Club is also included in this. Other press club, we will also inform them. Obviously, everybody will come together. I have no doubt about it. This is the one thing. Secondly, everybody was asking how to go about it. The second, we can meet here almost a daily basis, not like this beach building occasion. But there are many journalists who have come here, who are interrogated by the security agencies. If they like, I would ask them if you one or two how they face the interrogation. That will be a kind of a live description of what happened. Huh? Paranja is here. I again like. Paranja. बॉम्बे से कौन है? हमने गुरबील है। तो कॉल गुरबील ऑल्सो? नहीं, गुरबील यहाँ नहीं है, काश पूरे चल रहे हैं। ऑलरेडी प्रेस क्लब है, वो लंबा पोस्ट है। इरफान को पहले, इरफान वाज ऑल्सो Now, what we are saying, your experience, if you want to elaborate, it's short. Quickly, there are so many speakers. Paranjay, one of the hero of our media. हेलो वो ठीक कर रहे हैं अभी, आवाज ठीक कर रहे हैं। Hello. Are you able to hear me, ladies and gentlemen? Hello. No, the voice. There is a problem in the sound system. I don't know how it happened. So I can speak louder to the last one standing there. Hello. Can you hear me? They can't hear me. आवाज जिसने बंद करने का कोशिश कर रहा है, शायद उसका कुछ साजिश होगा। Give me the mic, man. Mic is here. Hello. No. All right, I'll stand up. All right. Nobody can hear you. Yesterday, the 3rd of October,
This is not working. I'm shouting. Yeah, it's not working. Gautam, what should I do? Power cut. He's trying that. They're trying to fix the machine. It's okay, sir. Let's see if they can fix the microphone. इधर हाँ Shall I wait? इधर माइक रखे क्या? 2 minutes. हेलो 2 minutes. They asked me to wait. हाँ इधर माइक रखे हाँ माइक दे जाओ ना है ना? No, they are trying to fix the mic. माइक इधर रख माइक दे जाते हैं कुछ कर रहे हैं हमारे माइक दे देते हैं ना रखने के लिए So what should I do? Ask Gautam. मैं यहीं Gautam? हूँ ना Huh? मैं No, it's not यहाँ पे working. यहाँ पे इनको Hello. I बिल्कुल don't know, it's not working. आगे कर दो माइक. हैंड सब कर रहा हूँ मोबाइल के साथ देखो देखा दे दीजिए प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ So then let's wait. I've been asked to wait. They are getting an alternative. You have to wait, guys, because we are arranging an alternate sound system within a few minutes. Gautam? No, but the mic is not working. Mr. Tashi Topgyal, what do I do? ये भी साक्षात हो गया है. क्या करें? They are trying to fix it. There's some irony here, no? Media not having a mic in our own home place. You bet. You are with scroll. Their social media. Reader revenue. Reader revenue. Tell me your name. Karnika. Karnika. We were on a panel together. Yes, I remember. I'm very bad. I'm so sorry. Hey, it's okay. I love your Modi quote yesterday to ANI. No, it was just spontaneously came out. I never imagined it would like suddenly everybody would go to sound. Hi, Firoz. Yes, we have been. आपको मिलेंगे वो लोग जो है अरे मत बोलिए सर, हमसे से ज़्यादा उम्र है प्रवीण का. ही 75 years old. 7 दिन का पुलिस कस्टडी में, 7 days पुलिस कस्टडी. जी जी. How old are you? I am going to be 68 tomorrow. Oh, Very young. I am also 72. Well done. That was the brilliant put down to ANI and
That was brilliant. Showed it, but everybody else did. Yeah. So I'm posting it and spreading it all over. You know, really brilliant. I'm but what is happening? I don't know. What is Gautam saying? What is Gautam saying? It will take 5-10 minutes. They are making the video. थोड़ा जगह मिल जाएगी। No, it's a letter to the CGI from a bunch of media organizations, Including the press club, etc. IDMI, what is that? There are 4 organizations. I think there's press club and there is that Digi Pub and there are Something happening right here, static. Okay then. This is Zai. I can't hear it here. I'm pretty sure you won't be able to hear it Hello. Are you able to hear me? No, not through the mic. Hello. 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 Oh yes. Hello. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. इसको हाथ में ले लीजिए। My journalist brothers and sisters, thank you so much for coming in such large numbers to show your support and your solidarity. I'll speak in English for a few minutes and then I'll say the same thing in Hindi. Yesterday at about 6:30 in the morning, 9 police persons came to my home and they asked me several questions and they wanted to seize my mobile phone, my laptop. I said, unless I get something in writing, I'm not going to give it to you. Then they asked me to come and accompany them at about 8:30 in the morning. After they spoke to me for roughly 2 hours,
at 8:30 in the morning. I went with them to the special cell, the office of the special cell, which is at Lodi Road, Delhi Police's special cell. Like right through the day, I was there till about 6 p.m. And through the day, various persons from the sub-inspector level to inspectors to assistant commissioner of police and finally the DIG, the Deputy Inspector General, all of them asked me questions of all kinds. Several questions were repeated over and over again. They asked me if I was an employee of Newsclick. I said, no, I'm not an employee of Newsclick. I'm only a consultant. They asked me how much money I had got. So I said, you have all my bank account details. Please check them out. Every single paisa I've got, I've raised invoices and they've given it to my bank account. So I later on realized what was happening. I later on realized that never before in the history of the capital of India have the police, literally hundreds of policemen, visited the homes of over 40 journalists and some non-journalists as well. There were activists and political activists and took all the data out in my presence. Okay, now the questions they asked me, they asked the same set of questions over and over again, but some of the questions they asked me, I was quite taken aback. They said, have you spoken to the US to one Mr. S. Bhatnagar? I said, yes, I have. He happens to be my brother-in-law. So yes, I've spoken with him. Then they asked me, do you use Signal? I said, yes, I use Signal. They asked me, have you covered the Delhi riots? I said, no. Times, and they said I can eat some food. They said, "Aap kya chahte hain, puri chola ya puri bhaji?" So they were very, very decent and well behaved, and I just hope they are equally well behaved now that Prabir Purokasta, the head of Newsclick, and who is being remanded to. Okay, all right, all these guys are here. I'll finish. Go up. Yeah. So Prabir Purokasta is 75 years old. He has been remanded to police custody now for a week. With him is one of his colleagues. His name is Amit Chakraborty. He was handling the human resources in Newsclick, and he is physically challenged. But I just hope that they treat them as nicely, as well, as politely as they treated me. Now, I have not been able to figure out, I mean, the first information report, which was lodged in the middle of August, has not been shown. All we know that the sections of the UAPA, the Unlawful Activities Prevention Act, are sections which deal with financing of terror. So I'm quite mystified and puzzled. Let us assume what the New York Times has said is correct. But the question would be, where does terror money come into all this? I'm not able to understand. Maybe the courts of this country will be able to understand. So I don't think ever in the city have so many journalists been rounded up together. Whether you want to call them questioned, whether you want to call them interrogated, whether you want to call the presence of police persons in their home at 6:30 in the morning as raids. These are all definitions. All they kept saying that, we are we are conducting investigations. So please cooperate with the investigation, and that included submitting your mobile phone and your laptop, and that also includes that you've given them the password. If your phone has a key, then you give them the password. So this is where I come from, and I think the message is coming very, very clearly. It's coming to every single journalist, every single independent journalist. What has happened yesterday, in my opinion, will have a chilling effect on independent journalism in this country. So this is, I believe, what is happening, and I do see this as a black day for the press, for the media in India. So this is all really I want to say. और आप लोगों को मैं एक ही बात हिंदी में कहना चाहता हूँ कि कल सुबह 6:30 बजे 9 पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हमारे घर में पहुँचे 6:30 बजे सुबह,
और हमें बहुत सारे सवाल उठाया। न्यूज़क्लिक के बारे में भी सवाल उठाया कि yeah, I'll have to go there and speak. I can't do anything about this. ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि आप इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं, आप नेविल रॉय सिंघम को पहचानते हैं कि नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं नेविल रॉय सिंघम को नहीं पहचानता हूँ। और इनका पैसा कहाँ से आया? तो मैंने बोला कि मैं न्यूज़क्लिक के साथ मैं सलाहकार हूँ, मैं एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं नौकरी नहीं करता हूँ न्यूज़क्लिक में, और मैं 2018 से मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी हमें पैसा देता है, रेम्यूनरेशन देते हैं, सारे मेरा बैंक का खाता में आ जाता है सीधा। मैं इनवॉइस देता हूँ और वो इनवॉइस सीधा मेरा बैंक का खाता में पहुँच जाते हैं। और आपके साथ आयकर विभाग है, आपके पास बैंक है, ये मेरा बैंक का खाता का नंबर है, आप खुद चेक कर लीजिए। और मैं सोचा कि बहुत अजीब अजीब सवाल उठाया। एक सवाल था कि आप क्यों आप क्या अमेरिका में एस भटनागर से बात किया? बोला हाँ, एस भटनागर का भाई है, ही इज माय ब्रदर इन लॉ। और इस तरह से बहुत सारे सवाल हमें उठाया। हमसे पूछा कि आपने सिग्नल का क्या? मतलब हाँ, मैं सिग्नल का इस्तेमाल किया। हमें कहा कि आपने दिल्ली में जो हिंदू मुस्लिम जो राइट हुई थी, जो दंगा हुई थी, आप इसका रिपोर्ट किया? मतलब मैंने नहीं किया। उन्होंने बोला क्या किसान आंदोलन के बारे में आपने कुछ लिखा था? तो मैंने बोला हाँ, मैंने लिखा, मैंने वीडियो बनाया। और इस ऐसे बहुत सारे सवाल था। मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया, बार बार मेरे को चाय कॉफी और क्या पूरी छोला ये सब देने के लिए तैयार थे। तो अलग अलग लोग, सब इंस्पेक्टर से शुरू करके इंस्पेक्टर से एडिशनल कमिश्नर, सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस से एकदम DIG तक अलग अलग लोग, अलग अलग समय हमें मिलना पड़ा। मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, हमारा जो फ़ोन था इन्होंने देखा, सारे सामान उनमें से जो भी डेटा है वो निकाल के रखा। तो मैं समझता हूँ ये जो किया, और मैं समझता हूँ दिल्ली के इतिहास में ये कभी नहीं हुई कि एक साथ सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने 40 से ऊपर पत्रकार का घर में 6:30 बजे पहुंचा, और पहुंचने के बाद अलग अलग सवाल उठाया। और बहुत सारे पत्रकार का मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इन्होंने ले लिया, सब कर लिया, उनके पास अभी भी है। किसी को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया वापस, और क्या कहते हैं उनका सिम कार्ड वापस दे दिया। तो मैं समझता हूँ एक संदेश देना चाहते हैं जो भी इसके पीछे है, कि स्वाधीन पत्रकार जो है और जो स्वाधीन पत्रकारिता में विश्वास करते हैं, आप सतर्क रहिए, सरकार कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और मैं आपको सब धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब एक लोग इकट्ठा आए हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि ये जो न्यूज़क्लिक के खिलाफ हो रहे हैं, एक दिन ना एक दिन शायद किसी पत्रकार के ऊपर इस तरह से कार्रवाई हो सकता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा साथ ये पुलिस अधिकारी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, और मेरा उम्मीद है कि जो प्रवीर पुरस्कार है, जिसका उम्र 75 साल है, और उनके साथ जो उनके सहकर्मी है अमित चक्रवर्ती, वो विकलांग है, उनको भी इस तरह से अच्छे व्यवहार करेंगे पुलिस अधिकारी। और बाद में क्या होगा नहीं होगा ये समय बताएंगे, अदालत बताएंगे। सिर्फ ये कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि एक व्यक्ति जिसके साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई संपर्क है, इनके पैसे लेके न्यूज़क्लिक चल रहे हैं। मगर ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो लेख आए हैं, इसमें ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति जो नेविल रॉय सिंघम है वो गैर कानूनी कुछ काम किया। तो हमें समझ में नहीं आ रहे कि ये जो आतंकवादी का पैसा चीन से अमेरिका होकर भारत में कैसे पहुंचा। मगर ये सारे काम है अदालत के। इससे पहले ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने न्यूज़क्लिक के ऑफिस के ऊपर छापा लगाया था मार्च 2021 में। फिर आयकर विभाग पहुंचा, फिर दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी पहुंचा, और अब ये UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का मदद लेके प्रवीर पुरस्कार को आज गिरफ्तार किया, और 7 दिन उन्होंने पुलिस की कस्टडी में। धन्यवाद, नमस्कार। Hello, we are very sorry that our my sound system is not working properly. We are trying to arrange an alternate thing. But one thing, many people have many suggestions how to work on it. But one thing I want to caution you
that Press Club of India is always a target for the establishment. So we should not fail the trap. That is my request to everyone. It's a long-term struggle. I am not saying it's a 1 day, 2 days. We can do it every day. We can do it month-wise or year-long. But once we have to sensitize everybody, take along everybody. In the meanwhile, we should not do anything that give a handle to the establishment to close down the club. If this club goes, there is no question. We know this government doesn't believe in any grammar, normal grammar. So I will only request you, since I don't know, well, I am audible for that. Because my voice is little better than foreign girls. So there are many, who have been harassed here, to call them and meanwhile, I can request you, this sound system, we can do a silent protest. Silent protest. Please remember, silent protest with our and whatever we have in our hand. We can stand outside the press club and don't try to go to the road. Otherwise, there will be chaos, and that chaos will be ultimately affect your prestigious and most beloved organization, Press Club of India. That only request we are requesting you. There are already some people who are trying to infiltrate it here, and there will be some agent provocators. Please, I am cautioning about them. You know, you are trying to find out your next side who is standing where. So please beware of this. We will want to continue this struggle. It is very unfortunate that our sound system is not working. But meanwhile, we would like to support the sound system down here and हमारे साथ MK वेणु हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से ये कल हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरह से UAPA खासकर पत्रकारों के खिलाफ लगा दिया गया है? क्या है, देखिए, एक तो पहली बार हुआ है कि एक संस्था, पत्रकार मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने UAPA लगाया। ये पहले कभी नहीं हुआ, और इससे ये साबित होता जा रहा है कि सरकार का रवैया मीडिया की तरफ, खासकर जो मीडिया जो इनके जो आलोचना करती है, उनके किस हद तक ये सरकार जा सकती है। और मैं 40 साल से मैं मीडिया में हूँ, 1983 से। मैंने आज तक 40 साल में 24 घंटे के अंदर 45 पत्रकारों पे इस तरह का कोऑर्डिनेटेड रेड और उनके घरों में घुसना सुबह सुबह, और उनके डिवाइसेस सीज करना, उनके घरों से चीज़ें सारे इलेक्ट्रॉनिक, उनकी सारी डेटा, पर्सनल डेटा सब ले जाना, ये मैंने कभी देखा नहीं। और इसमें ज़्यादातर फ्रीलांसर है जिन्होंने वो न्यूज़क्लिक के लिए कुछ स्टोरीज करी होंगी, कुछ वीडियो किया होगा, और 10 जगह और भी वो फ्रीलांसर हैं, 10 जगह और भी लिखते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि इतने बड़े दायरे में पुलिस रेड। ये तो साफ दिखाता है कि सरकार की नीयत है अब ये है कि मीडिया को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। जो भी मीडिया थोड़ा बहुत सवाल पूछती है, वैसे तो पूरी मतलब 80-90% मीडिया तो इन्होंने सबको पकड़ रखा है, मगर उसके अलावा में जो ऑनलाइन मीडिया खासकर, और कई और तरीके से भी ऑनलाइन मीडिया पे शिकंजा कस रहे हैं, नए नए लॉज ला रहे हैं, नए नए जो रूल्स ला रहे हैं ऑनलाइन मीडिया के लिए। तो ये तो एक किस्म से इमरजेंसी का दौर, जो आपातकाल का जो दौर है, वो एक नए तरीके से इन्होंने इम्पोज किया है विद इन सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इन्होंने अपना पूरा एक तंत्र बना लिया है कि किस तरह मीडिया को ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। वाला
लेकिन उसको सस्टेन करना Otherwise, the issue will be diverted or the agencies will take different views. We don't want to politicize this issue. We want to make sure that our journalists are free from being clutches of the police or establishment. ऐसी बात है प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि कुछ हम बात करेंगे मनोज ठाकुर हमारे साथ आशुतोष जी हैं इस वक्त। सर, जिस तरह से कल का इंसिडेंट हुआ है और खासकर यूएपीए और आज 7 दिन की रिमांड पर लोगों को भेज दिया गया है, प्रवीर को भी, एक तरह से यहाँ जो फैटर्निटी इकट्ठी भी हुई है, एक ही कंसर्न है कि शायद आने वाले दिनों में ये हमले और बढ़ेंगे। नहीं, इस मुकालते में हमें किसी को नहीं रहना चाहिए। ये हमले और नहीं बढ़ेंगे, बल्कि इस हद तक ले जाएंगे कि इस देश के अंदर कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, और जो बोलेगा वो उनकी आवाज़ बन के बोलेगा, और जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको आतंकवादी घोषित किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको कई सालों तक जमानत नहीं मिलेगी। जब सिद्दीक कप्पन के साथ हुआ तो हम सब लोगों को लगा कि अरे कोई अलहदा मामला है, सब लोग चुप रहे उस पर। अब समझ में आ रहा है कि ये जो क्या हो रहा है, ये सबकी आवाज़ बंद करने की कोशिश है। देखिए क्या होता है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहता नहीं अमेरिका में तो ब्रेक कर दिया होगा, बच्चा पानी ठीक है, तो ये स्टिल हैजंट गॉट एनीथिंग इन अमेरिका। आप पढ़ने गया तो उसको आ रही है। हां, तो मेरे साथ में काम किया 5 साल, वो तो मुझे बता रहा था। बैठिए, करो। Friends, I'm saying whether we can meet again at Friday in the next course of action. I hope not now to be okay. And because we can't hear everyone, we want to hear everyone. That's why today is our fortunate day. I think let us meet at Friday at 4 p.m. Friday 4 p.m. This is announced. We are not going to be Friday. Your case, your boss, on your own. कहाँ से आया भाई? मैं यूपी से। अच्छा, वो भी हिंदी हाजरा भी वहाँ पर आधा है, लेकिन आउट ऑफ क्या कैसे गया है? So far so good. 2 minutes. Can you? No, I have not come here for publicity. It's there. क्या है? मैं आप contribute करूँगा. I will speak in the appropriate forum. No worries. किसी का मन नहीं आता।
नहीं वो नहीं यार, तो ऐसा कॉमेडी collapsing of journalism, सिद्धार्थ वरदराजन है उधर, इधर सईद नकवी जो बैठे हैं कुर्सी पर। सिद्धार्थ का I wish to meet you. Yeah, when things are a bit calm. Yeah, the coming week we can meet you. Get another सिद्धार्थ साहब 2 मिनट्स इन हिंदी ओके आपका कौन सा मीडिया है? मीडिया मम्मू का मम्मी नहीं हिमालय थोड़ा वेळ लागेल। फ्राइडे का प्रोग्राम, फ्राइडे का बोल के गए लेकिन 4 बजे यही आना है, मार्च का क्या है वो पता नहीं, लेकिन हम इतना कर देंगे। नो मार्च दे विल नॉट गिव परमिशन। परमिशन नहीं दिया ना, आज का भी नहीं दिया। जैसे आज भी हाँ, तो व्हाटएवर विल हैपन हियर, आज भी नहीं दिया ना परमिशन। हमारे साथ सिद्धार्थ वरदराजन जी हैं इस वक्त। सर, जिस तरह से कल का इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद रिमांड पर भेज दिया गया है, 7 दिन की रिमांड पर प्रवीर को भी और उनके एक साथी को, साथ ही UAPA जैसा संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। किस तरफ स्थिति जाती हुई दिख रही है आपको? सबसे पहले तो सवाल सबको उठाना चाहिए कि न्यूज़क्लिक और न्यूज़क्लिक के जो संपादक हैं और न्यूज़क्लिक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका गुनाह क्या है? कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा उनका एक्शन हुआ है जिसको टेररिज्म और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के बराबर नापा जा रहा है? सरकार एक भी आर्टिकल बताएं, एक भी वीडियो बताएं, क्योंकि एक वेबसाइट का और क्या काम होता है? वेबसाइट का काम होता है कि आप कवरेज करते हैं। तो सरकार अभी तक नहीं बता पा रही कि किस कवरेज की वजह से, किस आर्टिकल की वजह से, किस वीडियो की वजह से इतना संगीन जो है अपराध या चार्जेस उन पर लगाए गए हैं। तो इसी से पता चलता है कि सारा जो प्रोसेस है ये फजूल का, झूठ मूठ का ये केस है, सिर्फ हरास करने के लिए। और इसमें मुश्किल ये है कि आपने एक बार UAPA लगा दिया किसी पे, तो जैसे सिद्दीक कप्पन के केस में देखा, तो ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और मतलब बड़ी आसानी से एक 1.5 साल 2 साल जेल के अंदर जो है सरकार किसी को भी रख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको लेके सारी जो हमारी प्रेस बिरादरी है, हम लोग मिल के आज कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं जिससे सरकार जो है अपने होश में आए। पेगासस की बात हुई थी बहुत पहले, अभी हमने फरंजॉय को भी सुना है, उन्होंने भी कहा कि उनसे पूछा गया कि आपने ऑस्ट्रेलिया बात की थी, अभी सर ने भी कहा कि उनसे ऐसे सवाल कीजिए। क्या वॉच किया जा रहा है या कॉल्स देखी जा रही हैं, लोग कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए, सर्वेलेंस के अलग अलग मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पेगासस एक बहुत एक्सट्रीम तरीका था, फरंजॉय तो उसका शिकार बना। इसके अलावा जो फ़ोन टैपिंग होता है, उसके अलावा सर्वेलेंस, मामूली सर्वेलेंस होता है। और ये मत भूलिए कि एक बार किसी का फ़ोन अगर छीन लिया तो फ़ोन का जो सारा रिकॉर्ड है वो सरकार के पास, पुलिस के पास पहुंच जाता है। तो उसी रिकॉर्ड को देख के जो है वो अपने सवाल बनाते जाते हैं। तो ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये अब एक जर्नलिस्टिक प्रोफेशन का एक ख़तरा मान के हमको चलना पड़ेगा कि हमारी जो सारी बातें हैं इसमें प्राइवेसी नहीं है और एहतियात से हमको काम करना पड़ता है, ताकि जो पेशे के मुताबिक जो खुफिया चीज़ें होनी चाहिए सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, खबरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो किस तरह से आप पुलिस की नज़रों से आप उसको बचा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत
वो भी है, तेल भी है। नहीं नहीं, अरे शाम उसी का ले लो। The other guy was. That's why I'm wondering. अरे खुशबू जी कैसी हैं? सर एक मिनट सर कंबाइंड ले हम इसी के साथ
सर, आप आज इस एक तरीके से प्रतिवाद जो सभा है उसमें शामिल हुए हैं, क्या आप कोई पैटर्न देख रहे हैं? इस तरीके के वैकल्पिक मीडिया जो यूट्यूब पे काम कर रहे थे, संस्थानों में काम करने के मौके तो वैसे ही कम होते चले गए, कम से कम, और अब उन पर भी जिस तरीके से दबिश बनाई जा रही है, उनको जिस तरीके से बांधने की कोशिशें हो रही हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, इस देश में मुख्य धारा का जो मीडिया है, टीवी चैनल और अखबार, उस पर तो सरकार का कब्जा हो चुका है। एनडीटीवी बचा था, उसको खरीद लिया गया, एंकर्स बैठा दिए जाते हैं, एडिटर्स भेज दिए जाते हैं, बच गया था डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया पे दो तरफ से हमला हो चुका था। एक कि यूट्यूबर्स को खरीदा जा रहा है, उनको इन्फ्लुएंसर्स को खरीदा जा रहा है। दूसरी तरफ आईटी रूल्स लाए गए थे जिससे कि उनको थमाया गया था। ये जो है तीसरी तरफ से अब हमला है कि सीधे सीधे पकड़ के थमका। जिस तरह से ये रेड हुई, जिन लोगों पे कॉपी एडिटर, कोई कार्टून बना रहा है, कोई लेख लिख रहा है, जिनका कोई मतलब नहीं है उस संगठन से, उनके ऊपर रेड। तो कुल मिला के इसका एक ही मकसद है कि इस देश के हर लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को, हर पत्रकार को ये समझा देना, बच्चों इलेक्शन आ रहा है, जरा सी चूक भी तो प्रवीर पुरकायस्था की तरह यूएपीए के अंदर कर दिए जाओगे, टेरर लॉ में, छोटा मोटा नहीं। सीधा ये संदेश है और मैं समझता हूँ कि इससे सरकार के अहंकार और सरकार की बौखलाहट दोनों स्पष्ट दिखाई देती है। और इतिहास गवाह है, जब जब सरकार इतनी अहंकारी और इतनी घबराई होती है तो कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ उठती, लोग उठेंगे। इस देश ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी, ये किस खेत की बोली है? अंग्रेजों को जिन्होंने हरा दिया, इनको भी निपट दिया। मगर सर, कम्युनिकेशन के तमाम मॉडल्स पर जिस तरीके से सरकार दबिश भी बना रही है और कब्जा भी करती चली जा रही है, वैसे में आप देख रहे हैं कि और इस तरीके के मैसेजेस भी सर्कुलेट होने लगते हैं कि तीस्ता के अकाउंट में इतने पैसे, उर्मिलेश के अकाउंट में इतने पैसे, और लोगों के पास जो सोशल मीडिया से ही बहुत सारे लोग अपनी समझदारी लेते हैं, तो ऐसा समझते हैं कि ये सर सच। इस तरह के बदनामी के कैंपेन चलते हैं, चलाए जाते हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन और ज़रूर इसका कुछ दिनों तक असर पड़ता है। कीचड़ फेंकोगे तो 2-4 दिन तक तो कुछ रहता है असर, लेकिन मुझे विश्वास है जिस तरह के पत्रकार इसमें शामिल हैं, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने एक ज़माने में कांग्रेस के खिलाफ भी बोला था, पर प्रवीर पुरकायस्था तो उन पहले व्यक्तियों में से हैं जिन्हें इमरजेंसी में गिरफ्तार किया गया था, 19 महीना जेल में थे। तो इन लोगों की साख पे दाग लगाना आसान नहीं है और मुझे विश्वास है कि वक्त के साथ साथ पूरा सच सामने आएगा और देश उनको याद नहीं रखेगा जिन्होंने रेड की थी या करवाई थी। देश उनको याद रखेगा जिन्होंने इस हालात में भी अपना मुंह खोला। सर शुक्रिया। खास करके पत्रकार जिनका पेशा भी है और एक राजनीति पर अपराधियों पर करने नहीं दिया जाएगा। Whenever I see you all, I remember that you all like to come to our place. Wait! Okay, yeah, nice. Outside. Okay.
Yeah, there were some speakers. But you know, I mean, it's like, you're For the white people. हमारा साउंड सिस्टम आ गया है। साउंड सिस्टम आ चुका है। साउंड सिस्टम मतलब बनाता है If you want to listen now, many things. क्या